Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the sentence structure with regard to its meaning, with regard to its structure. Okay, we've learned four types or the four parts of the sentence structure, and this is our fifth type. This is our fifth type, and the name of this type is the optative sentence. Let's see that what is optative sentence, we use it, and how it is helpful in our grammatical usages. So let's get started. ZEC English Crash Course. So the students, हम जो इंग्लिश के टॉपिक सीख रहे थे उनमें से हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसके यूजेज के एतबार से, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसकी मीनिंग के एतबार से पढ़ रहे थे। तो उसके हमने चार पार्ट्स पढ़े थे। मीनिंग के सेंटेंस स्ट्रक्चर के यूजेज की मीनिंग के एतबार से हमने चार पार्ट्स पढ़े थे। आज का जो हमारा पार्ट है वो पांचवा पार्ट है, दैट इज द फिफ्थ टाइप, जिसको ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस ऑपरेटिव सेंटेंस को उर्दू के अंदर ख्वाहिशी जुमले कहा जाता है। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। So the definition of the operative sentence is that these types of the sentences are used to show the wish, feelings or desires. These types of the sentences are used to show the wish, the feelings and the desires. Okay, हम इसको ख्वाहिश शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। These types of the sentences are called the operative sentences. So हम इसको wish, desire या फीलिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो यूजुअल वर्ड ऑर्डर है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इन दीज सेंटेंसेस आर टू। हाउ मेनी? द यूजुअल वर्ड ऑर्डर इन दीज सेंटेंसेस आर टू। हाउ मेनी वर्ड ऑर्डर आर यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस? टू वर्ड ऑर्डर आर यूज्ड। नंबर वन, वुड दैट, नंबर टू, मे। सो द सेंटेंस ऑफ वुड दैट, हियर कम्स द सेंटेंस ऑफ द वुड दैट। You know, sentence number one says that would that you were sensible. Would that you were sensible. काश आप समझदार होते. Would that you were sensible. It is showing the desire, the feelings, the wish. It is showing the desire or the wish of somebody or some person that would that you were sensible. काश आप समझदार होते. Sentence number two है would that he had spoken the truth. काश वो सच बोलता. काश उसने सच बोला होता. काश उसने सच बोला होता। तो इसकी इंग्लिश क्या है? वुड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वुड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। सेंटेंस नंबर थ्री इज वुड दैट शी वर एक्टिव माइंडेड। वुड दैट शी वर प्रेजेंट माइंडेड। वुड दैट शी वर प्रेजेंट माइंडेड। काश वो हाजिर दिमाग होती। या वुड दैट शी वर एक्टिव माइंडेड। काश वो चालाक दिमाग होती, काश वो चालाक होती। तो किया गया है वो विश और डिजायर को शो किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड दैट कश्मीर वर माई ड्वेलिंग प्लेस। वुड दैट कश्मीर वर माई ड्वेलिंग प्लेस। वुड दैट कश्मीर वर माई लिविंग प्लेस। बोथ हैव गॉट सिमिलर मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है? काश मेरे रहने की जगह कश्मीर वर माई लिविंग प्लेस इज वन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द ऑपरेटिव सेंटेंस, that is showing the wish, that is my wish, showing desire, that is my desire. That's why this sentence is one of the part of the operative sentence. Would that she were industrious. Would that she were industrious. काश वो मेहनती होती। तो इस सेंटेंस के अंदर would that she were industrious जो है वो ऑपरेटिव सेंटेंस का ऑपरेटिव सेंटेंस है और showing wish और desire. Would that you were present in the party. काश आप पार्टी में प्रेजेंट होते और आपको पता चलता कि हमने कितना एंजॉय किया। Would that you were present in the party. तो इस सेंटेंस के अंदर, तो ये भी सेंटेंस जो है वो ऑपरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। सो द ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर दो वर्ड ऑर्डर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वुड दैट इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा मे इस्तेमाल किया जाता है। वुड दैट हमने इस्तेमाल कर लिया है। आइए देखते हैं कि मे के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड ऑर्डर इज मे इन ऑपरेटिव सेंटेंस। So the students, the second part of the operative sentence, that is the word order, the second word order of the operative sentence is the may. How do we use may? We have already learnt the may in the exclamatory sentences. So we also use it in the operative sentences because it has two parts.
one word order is used as a would that, second word order is used as may. So may you live long, may you live long, खुदा आपको लंबी उम्र दे। तो इस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज शोइंग द विश और द डिजायर ऑफ समबॉडी। यू आर wishing, you are desiring to for somebody else to give him long life. Okay, next sentence is may he succeed in his life. खुदा करे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। may he succeed in his life। तो इस सेंटेंस के अंदर भी जो ऑपरेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर भी हमने विश या डिजायर को शो किया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज may she achieve her goal। खुदा करे कि वो अपना मकसद हासिल कर ले। तो इस सेंटेंस को भी हम ऑपरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं, बिकॉज इट इज शोइंग द डिजायर और द विश ऑफ समबॉडी और some person of somebody. Next sentence is may they pass the test. may they pass the test, खुदा करे वो टेस्ट पास कर लें। तो इस सेंटेंस को भी हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो शोइंग द विश और द फीलिंग्स और द डिजायर ऑफ समबॉडी। ओके, these types of the sentences are called the operative sentences. Okay, our today's topic was the operative sentences. Why do we use operative sentences? These types of the sentences are used to show the wish, the feelings and the desire in the operative sentences. These are called the operative sentences. So in the operative sentences we have to show the wish, the desire and the feelings of somebody. What are the usual word order of the operative sentences? The usual word order of the operative sentences are would that and may. We have already used the would that as well as the may. So would that you were sensible, काश आप समझदार होते। would that he had spoken the truth, काश उसने सच बोला होता। would that she were active minded, काश वो हाजिर would that she were present minded, काश वो हाजिर दिमाग होती। would that Kashmir were my dwelling place or living place, would that she were industrious, would that you had understood me. These are all of the sentences of the would that. Next sentences are may he succeed in his life. May he succeed in his life. May you live long. May you live long. Next sentence is may she achieve her goal. May they proceed ahead for their adventure. अच्छा, इसके अंदर नोट करने की बात कौन सी है? नोट करने की बात कौन सी है सेंटेंस के अंदर? जब भी हम would that इस्तेमाल करते हैं, whenever we use the would that, हम would that के साथ फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो प्रोनाउन। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सारे पर्सन्स के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ या नाउन्स के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ कभी भी वाज इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ग्रामर का रूल है, ये ग्रामर का रूल है। अगर आपने वर की जगह वाज इस्तेमाल किया, जैसा कि हमने सेंटेंस बना है पीछे, जैसा कि हमने सेंटेंस बनाया would that she were sensible, would that she were industrious, would that she were active minded, she were present minded। इसके अंदर अगर आपने लिखा कि would that she was absent minded, would that she was present minded, would that she was sensible, तो आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? They will be the wrong sentences because this is not the rule of the operative sentences where you should use instead of word in the operative sentences with would that. ओके, would that के साथ हम कभी भी was इस्तेमाल नहीं करते। would that के साथ हम हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने was इस्तेमाल किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। रेयर केसेस के अंदर was इस्तेमाल होता है। हम ये आगे चलकर सीखेंगे कि would that के साथ was कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ द एडवांस लेवल। हम यहाँ पर सिर्फ थारोली कवर कर रहे हैं। So the students, our today's topic is over. See you after a short break in the next lecture. Take care.